Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. Finally, we have reached the point where we are entering the last phase of this course, the third and the final part, which is the use of machine learning in order to solve various interesting speech processing problems. And the first thing that we're going to begin with is what it would include somewhat of a revision of your basic concepts of probability. Um, and in addition to that, we'll be looking at some high-level, big-picture concepts that we'll be using in the theory of speech recognition. So we'll be starting with speech recognition. The method of speech recognition that we will be using initially would be an HMM-based, hidden Markov model-based speech recognizer. Although now we have more advanced, more sophisticated techniques, but it is useful to start with a model which is more explainable and which gives you a complete perspective on how speech recognition is done and what are the steps involved in the whole process, so that even if we replace it with a more sophisticated model in the future, you should be able to explain what's going on under the hood. So that's the motivation here. And we'll begin with the concept of the probability of a sequence. So up until now, you have seen examples where we matched sequences with other sequences using added distances and similarities, and also we looked at dynamic time warping in quite a bit of detail. And at that point, if you remember, I also discussed that there is an algorithm which gives you the maximum probability alignment between two sequences, and that's the Viterbi algorithm. And the Viterbi algorithm essentially applies to hidden Markov models. We now need to build from where we are right now to the point where we want to be, where we are able to essentially align a sequence of sounds to a sequence of characters or to text, which is essentially what is speech recognition. So in the next slide, I'll basically go over the whole concept in a very high level, big picture way, and then from there onwards we will start revising some concepts of probability. एक चीज मैं यहाँ पर explain कर दूं for those of you who have already studied my course on machine learning. आप लोगों से ये request है कि अगर आपको ये लगे भी कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इस lecture के कुछ हिस्से में और वो आप पहले कर चुके हैं, तो आपसे फिर भी रिक्वेस्ट है कि आप उसको दोबारा से मेरे साथ कर लें, बिकॉज इन मैनी प्लेसेस आई विल बी डिवर्जिंग फ्रॉम द कोर्स दैट आई टुक इन मशीन लर्निंग. मेरा यहाँ पाथवे थोड़ा सा फर्क होगा. वहाँ हमारा मकसद था, बिकॉज एज फॉर जस्ट एड्रेसिंग दोज ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी स्टडीड मशीन लर्निंग, वहाँ पर जब हमने बेस थ्योरम इंट्रोड्यूस किया था और उसको बिल्डअप किया था पूरा, वहाँ से आगे हम क्लासिफिकेशन की तरफ चले गए थे और लैंग्वेज मॉडलिंग की तरफ हमारा इतनी तवज्जो नहीं थी. यहाँ बिल्कुल पाथवे डिफरेंट है. So we'll be building up to the Bayes theorem, लेकिन वहाँ से आगे rather than going into classification in a lot of detail, we'll be going into language modeling. तो pathway बदल जाएगा और अच्छा है कि आप एक दफ़ा वो दोबारा रिवीजन कर लें. जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ Bayes theorem को, आपको लगेगा दिस इज़ बोरिंग या पहले कर चुके हैं, लेकिन वो भी आप दोबारा एक दफ़ा कर लें, क्योंकि मैंने इस दफ़ा जो इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो खुद उस बिल्डअप के अंदर शामिल कर दिए हैं, rather than having a separate video on that, क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी बहुत ज़्यादा अलग से डिटेल्ड रिपरकशंस को समझने की ज़रूरत नहीं है, जो काम अभी हम करने लगे. ठीक है, तो विद दैट इंट्रोडक्शन, लेट्स लुक एट अ बिग पिक्चर ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट वुड बी द पार्ट्स involved in that whole operation. All right, so here is the big idea of what we want to accomplish. ये आपके सामने एक स्पेक्ट्रोग्राम है, और बाय द वे जो यहाँ बोला गया है वो ये वाला सेंटेंस है, खोदा पहाड़ निकला चूहा. बट द वे द प्रॉब्लम, और एटलीस्ट द स्पीच रिकग्निशन प्रॉब्लम दैट वी आर लुकिंग एट right now, so the speech recognition problem is, that given this audio file, or given this sequence of sounds, you need to output something like this. You need to output text. So अब इस पूरे प्रोसेस में आप इतना अब स्पीच के कोर्स को पढ़ चुके हैं कि आप इस प्रॉब्लम की अब डिटेल्स को अपने जहन में एटलीस्ट विजुअलाइज कर सकते हैं. सो यू नो वेरी वेल कि फ्रॉम अ स्पेक्ट्रोग्राम, as humans at least, we can deduce the sounds that were uttered. तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट्स भी नज़र आ रहे हैं. You can probably now tell कि vowels कहाँ पर हैं और consonants कहाँ पर हैं और fricatives कहाँ पर हैं उनमें से, and so on and so forth. However, when we want a machine to deal with this task, how would
we essentially go about implementing this. And speech recognition, by the way, is not an easy problem to solve. It has basically perplexed scientists for a very long time until we were able to develop several techniques, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसको टैकल करना इतना शायद मुश्किल नहीं रहा. However, in its entirety इसको सॉल्व करना, जर्नल स्पीच रिकग्निशन फ्रेमवर्क बनाना, ये अभी भी अच्छा खासा मुश्किल काम है. However, आप लोगों को द गुड न्यूज़ इज़ कि इतना कुछ आप पढ़कर आ चुके हैं इस सेमेस्टर में कि होपफुली जो कुछ मैं यहाँ से आगे कहूँगा वो समझने में आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी. ओके, सो अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. देखें, सो व्हाट यू हैव हियर इज एन ऑडियो इज एन ऑडियो सीक्वेंस. तो ये आपको एक स्पेक्ट्रोग्राम यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसके अंदर जो है वो आपको एक सीक्वेंस ऑफ फोनीम्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हैं. ऑल्दो देयर आर नो बाउंड्रीज विच आर मार्किंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फोनीम्स. कोई वर्ड बाउंड्री भी मार्क नहीं हुई हुई, कोई फोनीम बाउंड्री भी मार्क नहीं हुई हुई. सो एसेंशली अब आपको एक सर्च टास्क दिया गया है कि गिवन ऑल ऑफ द फोनीम्स, सो लेट्स से उर्दू, अगर हमें मालूम है कि ये उर्दू की एक साउंड फाइल है, तो उर्दू की सारी 63 फोनीम्स आपके पास गिवन हैं, एंड यू नीड टू समहाउ फिट दोज फोनीम्स अलोंग दिस स्पेक्ट्रोग्राम. सो यू नीड टू समहाउ से कि जी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आ बोला गया था, या बा बोला गया था, या का बोला गया था, या खा बोला गया था, या गा बोला गया था, या घा बोला गया था, क्या चीज़ बोली गई थी और कहाँ से कहाँ तक बोली गई थी. वी डोंट नो आइदर ऑफ दोज. सो एक चीज़ जिसके अब तक आप आदी हो चुके हैं वो तो है फ्रेमिंग, कि ऑल राइट वी कैन जस्ट बेसिकली फ्रेम आइदर ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग. हम फ्रेमिंग कर देते हैं इस पूरी की पूरी फाइल की, सो दैट एटलीस्ट हमारे पास कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स तो आ जाए ना जिसके ऊपर हम कुछ चीज़ को मैप करें. ऑल राइट, सो आई हैव क्रिएटेड दीज फ्रेम्स. इन माई केस, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, आई हैव क्रिएटेड दीज नॉन ओवरलैपिंग फ्रेम्स. ऑल्दो के नॉन ओवरलैपिंग की इतनी सेंस नहीं बनती, द फ्रेम्स शुड बी ओवरलैपिंग क्योंकि फोनीम कहीं से भी शुरू हो सकती है. एंड नाउ गिवन दिस सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, we need to somehow map these frames to a sequence of phonemes. तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अच्छा एक ही फोनीम के ऊपर मल्टीपल फ्रेम्स भी मैप हो सकते हैं. और सो फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से भी इसको बनाते चले जाएंगे, इन द एंड यू विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ फोनीम्स. लेट मी कॉल इट P1, P2, P3, P4, P5 अप टू Pn. एक सीक्वेंस ऑफ फोनीम्स है और एक सीक्वेंस ऑफ साउंड्स है जो कि इस ऑडियो फॉर्म में आपके पास फिलहाल आपको स्पेक्ट्रोग्राम नज़र आ रहा है और आपको इनके बीच में एक मैपिंग क्रिएट करनी है. अच्छा, अब यहाँ तक आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस पूरे स्पेक्ट्रोग्राम को और इसके उस हिस्से को स्पेशली जहाँ पर ये कैप्चर होता है कि क्या बोला गया था, इसको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि वी कैन सिंपली यूज़ दी मेल फ्रीक्वेंसी कैप्चुरल कोफिशिएंट. सो वी कैन जस्ट यूज़ अ 39 dimensional वेक्टर हियर फॉर ईच ऑफ द फ्रेम्स, और वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस सब कुछ को जो यहाँ पर कंटेन्ड है. अगर आप इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं, जो कि आपको पिछले लेक्चर के बाद होना चाहिए, सो नाउ यू एसेंशली नो कि दिस इज basically a mapping problem between these P1 to Pn phonemes and these vectors V1, V2, V3, V4, V5 up to Vn. So this is a mapping problem. और अगर मैं ये problem आपको DTW से solve करने के लिए दूं, तो you can solve it provided कि इस vector और इस phoneme यानी किसी भी vector Vi और phoneme Pi के बीच में comparison करने का मेरे पास कोई distance measure हो. That's where it gets a little bit complicated. These vectors are defined over Mel frequency capsular coefficients, whereas these phonemes are essentially just alphabets. These are just your IPA. ये तो और कुछ भी नहीं है. तो आपने किसी तरह से इन vectors से इन IPA तक पहुंचना है. और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि we can essentially create another mapping from these phonemes to a representation of each of these phonemes in the form of Mel frequency capsular coefficients. तो अब ये देखिए कि ये तो आपके पास एक एग्जाम्पल फाइल आई है जिसके ऊपर आपको कहा जा रहा है कि बताएं इसमें क्या बोला गया था. लेकिन फॉर ईच फोनीम इन माई डिक्शनरी, सो लेट्स अज्यूम आई हैव ऑल ऑफ द फोनीम्स इन माई डिक्शनरी. सो लेट्स से फोनीम P1, P2, P3, P4 एंड लेट्स से फॉर उर्दू P63. Assuming 63 phonemes in Urdu, मेरे पास 63 phonemes मौजूद हैं. Now, if I create a representative sample for each of these phonemes of an MFCC vector, so let me call it this MFCC vector, just I don't know, V. So this is like my V1. So P1 का representative vector मेरे पास जो है वो ये V1 है. मैं by the way यहाँ ऊपर capitals use कर रहा हूँ. So
P1 फोनीम का, लेट्स से ये आ फोनीम थी, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर है मेरे पास V1. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स? अ रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल फोनीम आ. फर्ज कर लें कि हमें ये सारे के सारे किसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स मिल गए. सो वी हैव V1, V2, V3, V4 अप टू Vn. सो V64 in fact 63. So मेरे पास ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स आ गए. नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, जो इस टेस्ट सेट स्मॉल लेटर्स V1 से Vn का है विद दिस P1 to Pn, दिस कुड essentially become just a comparison between this set V1 to Vn and all of the dictionary phonemes that I have available. और वो उनके मैं कैपिटल V1, कैपिटल V2, कैपिटल V3, so essentially मैं इस V1 को कंपेयर करूंगा सारे के सारे V1 to V63 के साथ, V1 to V63 के साथ जो मेरी डिक्शनरी के अंदर है. If I am able to compare them somehow, and with you already can think of some ways of essentially now comparing these two vectors, because ये भी MFCCs हैं और ये भी MFCCs हैं, इनको हम compare कर सकते हैं. So this can give us essentially, so I'm, at this point मेरा अभी details में जाने का बिल्कुल ना plan है और ना उसकी ज़रूरत है और ना शायद अभी हम उसके लिए ready हैं. All I want is you to have an image in your heads कि अब ये काम हो किस तरह से रहा है. So essentially हो ये रहा है कि आप इस small V1 से शुरू होते हैं और आप एक रैंक्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं इन सारे के सारे डिक्शनरी फोनीम्स की, कि जिस V1 का, इस सीक्वेंस के अंदर इस V1 का जो सबसे अच्छा मैच हो रहा है वो लेट से हो रहा है कैपिटल V5 के साथ, और जो दूसरा सबसे अच्छा मैच हो रहा है वो कैपिटल V6 के साथ हो रहा है लेट से, और इस V2 का जो सबसे अच्छा मैच हो रहा है वो V26 के साथ हो रहा है, और जो दूसरा सबसे अच्छा हो रहा है वो लेट से 37 के साथ हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ मैं हर कैंडिडेट लिस्ट में खाली दो दो ले रहा हूँ. ऑल राइट, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि जी ये जो फर्स्ट वाला फ्रेम है ना, ये हो सकता है कि यहाँ पे आ बोला गया हो या ए बोला गया हो. ये जो सेकंड वाला है इसमें या आ बोला गया हो या ई बोला गया हो. ये जो थर्ड वाला फ्रेम है इसमें या आ बोला गया है या लेट्स से जो है वो इसमें आई डोंट नो दोबारा ए बोला गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये मेरे पास कैंडिडेट लिस्ट्स आ रही हैं. सो एंड these candidate lists, and these could be bigger, so it could be like an O here, and let's say and A here, and so on and so forth. तो ये candidate lists आ रही हैं. Now given these candidate lists, जिन तक मैं पहुंचा हूँ essentially इन V's के, इस डिक्शनरी के इन V's के साथ कंपैरिजन करके, इन वेक्टर्स के कंपैरिजन करके मैंने कैंडिडेट लिस्ट निकाल ली हैं. Now essentially I want to find out the highest probability candidate list from out of all of these lists. अब ये probability candidate list कैसी कहाँ से आएंगी? ये आएंगी इस चीज़ की बेस के ऊपर कि क्या कौन कौन सी फोनीम किस दूसरी फोनीम के बाद आना ज़्यादा प्रॉबेबल है. सो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी जो यहाँ सेंस बन रही है वो ये है कि ये सब आ हैं और उसके बाद जो है वो ये वाली साउंड आई है, और लेट से ये है और उसके बाद ये वाली साउंड आई है, और लेट से उसके बाद ये वाली साउंड आई है और उसके बाद ये वाली साउंड आई है, उसके बाद ये वाली साउंड आई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इसको ट्रिवर्स करके मैं एक ऐसा सीक्वेंस निकाल लेता हूँ आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज कैंडिडेट्स विच इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस गिवन ये जो मेरे पास ऊपर साउंड का सीक्वेंस दिया हुआ है. This is the first step in the speech recognition pipeline. So पहला step essentially क्या है? Given an audio file, आप उसे पहले convert करते हैं एक ऐसी representation में जिसके ऊपर आप distances calculate कर सकें, similarities और differences निकाल सकें. वो हमने देखा है कि MFCCs उसके लिए बहुत अच्छी हमारे पास एक representation है. So all right, so 39 dimensional MFCC आ गए हर frame के लिए given this audio file. So हर frame के लिए मेरे पास एक MFCC की representation आ गई. Now I compare each frame against some template of each phoneme that I have in my dictionary and find out the list of all the phonemes जो इससे सबसे closely matched हैं. इस लिस्ट का साइज मैं 1 भी रख सकता हूँ, मैं सिर्फ बेस्ट को उठा रहा हूँ. इसका साइज मैं k भी रख सकता हूँ, where k is a number between 1 and 63 in this case, कि सारे के सारे 63 की लिस्ट भी आ सकती है मेरे पास, और वो किसी तरह रैंक हुए में हो कि सबसे ज़्यादा मैच जो है वो इससे ये कर रहा है, दूसरे नंबर पे मैच ये कर रहा है, तीसरे नंबर पे मैच ये कर रहा है, and so on and so forth. That gives me for each frame a candidate list कि इस फ्रेम में कौन कौन सी चीज़ बोली जा सकती है. And now given all of these candidate lists, my next task is to basically traverse these lists and to figure out
कि कौन सा इनमें से सीक्वेंस सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है, एंड वी विल सी, और जैसा कि हमें मालूम है कि हर आवाज़ के बाद आना इक्वली प्रोबेबल नहीं है। बहुत सी आवाज़ें दूसरी आवाज़ों के बाद आना ज़्यादा प्रोबेबल हैं, कुछ आवाज़ें दूसरी आवाज़ों के बाद आना कम प्रोबेबल हैं। सो लेट्स से, जैसे कि हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि उर्दू के अंदर जो है वो लेट्स से ब या पा या कोई भी स्टॉप जो है वो 2 दफ़ा तो इकट्ठा आ सकता है, जिसको हम जेमिनेशन कहते हैं, 3 दफ़ा नहीं आ सकता। तो इससे पता लग गया कि अगर बा लंबा होता चला जा रहा है तो एक पॉइंट पे आके आप कहेंगे भाई अब ये वो वाली साउंड नहीं है। ये सब कैसे पता लगेगा? बाय लुकिंग एट अ रियली बिग रिपोजिटोरी ऑफ दैट लैंग्वेज। क्या आप उसको उर्दू की बहुत सारा टेक्स्ट और साथ ऑडियो दे देंगे और उसको हम किसी तरह से ट्रेन करके उसके ऊपर ये देखेंगे कि कौन कौन से सीक्वेंसेस ज़्यादा प्रोबेबल हैं और कौन से कम प्रोबेबल हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? एंड इन द एंड आपके पास एक सीक्वेंस निकल के आ जाएगा या सेट ऑफ कैंडिडेट सीक्वेंसेस निकल के आ जाएंगे इस सब कुछ में से, इसको ट्रिवर्स करने के बाद इस कैंडिडेट लिस्ट को, और आप ये कहेंगे कि जी इसके अंदर प्रॉबेबली जो है वो जो चीज़ें बोली गई हैं वो इस तरह की हैं कि जी इसमें खोदा पहाड़ और आई डोंट नो निकली चूहा, या खोदी पहाड़ या खोदी पहाड़ा निकला चूहा, और वट इस तरह के आपके पास सीक्वेंसेस यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। अच्छा, अब इन सीक्वेंसेस के ऊपर हम एक एडिशनल काम करेंगे। कुछ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हमारी उर्दू ज़बान में, हमारी लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा प्रोबेबल होंगे, और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होंगे जो लैंग्वेज में कम प्रोबेबल होंगे। जैसे खोदी पहाड़ जो है वो कम प्रोबेबल होगा एज कम्पेयर टू खोदा पहाड़। ठीक है, ये मैचिंग जो है ये लैंग्वेज लेवल के ऊपर हो रही है। सो गिवन कि जब ये यहाँ से हमें एक और कैंडिडेट्स की लिस्ट देगा, सो पहले उसमें कैंडिडेट लिस्ट थी खाली फोनीम्स की, अब उसने फोनीम सीक्वेंसेस निकालकर हमें एक और सेट ऑफ कैंडिडेट लिस्ट दे दी हैं जो कि प्रॉबेबली हैं वर्ड्स की। सो दिस इज योर वर्ड सीक्वेंस 1, दिस इज योर वर्ड सीक्वेंस 2, दिस इज योर वर्ड सीक्वेंस 3, और ये कह रहा है कि जी इनमें से कोई चीज़ बोली गई है शायद यहाँ पर। अब इनको हम रैंक करेंगे यूजिंग द लैंग्वेज नॉलेज दैट वी हैव कि कौन कौन से वर्ड सीक्वेंसेस ज़्यादा प्रॉबेबल हैं और कौन से कम हैं, एंड विल जस्ट पिक द विनर कि जी इनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉबेबल सीक्वेंस जो है वो ये है, और वो है जी खोदा पहाड़ निकला चूहा। सो इन अदर वर्ड्स, हमारा जो स्पीच रिकग्निशन का काम है वो 2 लेवल्स के ऊपर हो रहा है। सो गिवन एन ऑडियो फाइल, हम सबसे पहले उसका एक अकूस्टिक लेवल के ऊपर सीक्वेंस फाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी सेट ऑफ फोनीम्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोबेबल हैं जो उसके अंदर बोली गई हैं, एंड फ्रॉम अकूस्टिक्स वी गो टू लैंग्वेज एंड वी आस्क द लैंग्वेज कि इनमें से, और जाहिर है जब सेट ऑफ फोनीम्स निकाली हैं तो उनको हम यहीं पर वर्ड्स पे मैप कर लेंगे, और उसके बाद हम लैंग्वेज से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड सीक्वेंस ज़्यादा प्रोबेबल है, और आखिर में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का जो वर्ड सीक्वेंस है वो आउटपुट कर देंगे कि ये यहाँ पर बोला गया था। सो आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया ऑफ हाउ दिस इज ऑल गोइंग टू वर्क। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं सबको समझने के लिए, उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंसेस होता क्या है, हाउ डू यू एक्चुअली असाइन प्रोबेबिलिटी टू अ सीक्वेंस, क्योंकि आपको बार बार ये करनी पड़ रही है, and then how do you compare two sequences and find out the best probability alignment between those two sequences। यानी given आपके पास ये वाला sequence और given आपके पास ये वाला sequence, how do you find the best alignment between these two sequences। ये सब कुछ समझने के लिए we need some background in the theory of probability। We need to have some concept of the concept of joint probabilities and conditional probabilities, and that's exactly what we'll be doing from here onwards। ये वाली चीज़ अगर आपको I don't know 50% भी समझ आएगी तो काफ़ी है। अभी मेरा मकसद सिर्फ आपको जनरल आइडिया देना था। यहाँ से आगे अब हम कंक्रीटली जो है वो कुछ प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं और उसके बाद सीक्वेंसेस की प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, और उसके बाद विल स्टार्ट वर्किंग विद द हिडन मार्कov मॉडल्स। सो दीज आर सम ऑफ द रेफरेंसेस जहाँ से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है जो मैं आगे यूज़ कर रहा हूँ। इनमें से कुछ आपके बहुत जाने पहचाने जो हैं वो रेफरेंसेस हैं जिनके अंदर जो है ये 3 ब्लू 1 ब्राउन शामिल है या बेटर एक्सप्लेन्ड है। सो और उसके साथ साथ जो है आपकी बुक भी है, कुछ और रेफरेंसेस हैं, डॉक्टर सरमद की स्लाइड्स हैं जिनका जिक्र मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ। सो एंड ऑब्वियसली योर ओन बुक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। All right, Ji. So let's begin. Let's begin with really basic stuff. So we'll be revising probability and we'll be introducing a concept known as Bayes theorem, जो कि hopefully आपने इससे पहले probability के कोर्स में पढ़ा हुआ है. Okay, if I ask you a question कि आपके पास एक fair coin है जिसे आप toss करते हैं, so then what's the probability of heads? So you're gonna immediately say it's 0.5 or 1/2. All right.
सो गिवन कि ये फेयर कॉइन था और गिवन कि आपने कोई प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं की है इस चीज को कि कॉइन सीधा भी खड़ा हो सकता है, तो देन यस आई एग्री विद यू, इट वुड बी 1/2 0.5, क्योंकि दोनों इवेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली थे, हेड्स का आना और टेल्स का आना। यहाँ पर एक चीज जरूर ऑब्जर्व कर लें कि जो डिनोमिनेटर में आपने चीज लिखी है दैट्स एसेंशियली ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द करंट यूनिवर्स, यही सब कुछ आ सकता था। अगर यहाँ तीन चीजें मुमकिन होती, यानी कि हेड्स टेल्स और स्ट्रेट खड़ा होना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज होती, लेकिन ऑब्वियसली इनके वेट्स फिर हम अकॉर्डिंगली देखते कि वो इक्वली क्या ये प्रोबेबल इवेंट्स हैं या नहीं हैं। सो दैट बेसिकली एसेंशियली डिफाइंस योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन दैट यूनिवर्स विद देयर असाइंड प्रोबेबिलिटीज, कि हर इवेंट और उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं। Alright, let's take another example. एक fair dice है जिसको आप roll करते हैं, and then what's the probability of getting, let's say, a 6? Again, it's 1/6 अगर ये fair dice है, और again आप ये assume कर रहे हैं कि वो अपने कोने पे खड़ी नहीं हो सकती dice जो है, वो होगी तो किसी न किसी face के ऊपर land करेगी, और उसमें कोई ना कोई एक चीज़ है जो top के ऊपर आ रही होगी। अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं इन द करंट यूनिवर्स। मैं इसको क्यों फोकस कर रहा हूँ इस छोटी सी बात को, इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इसकी मुझे आगे ज़रूरत है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार ये तो बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अनलेस यू आर रियली गुड एट प्रोबेबिलिटी, 3-4 स्लाइड्स के अंदर हम ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये रिविजन कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वी स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन ग्राउंड, जहाँ पे मुझे पता है कि मेरी क्लास के 85 स्टूडेंट्स को ये वाली चीज़ बिल्कुल आसान लगेगी। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देयर इज नो अदर रीजन, एंड इट विल बिकम interesting really quickly. All right, so moving on to more interesting stuff. Let's talk about joint probability. So suppose we throw a white and a black die simultaneously. अब आपने pause करके पहले खुद आंसर करना है इस चीज को. What's the probability that the outcome would sum to 3? Pause करें, आंसर करें, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको एक दफा आंसर कर लें. Alright, so दो इवेंट्स हुए हैं, व्हाइट और ब्लैक डाई आपने फेंकी है, लेकिन साइमल्टेनियसली फेंकी है. सो योर क्वेश्चन इज एसेंशियली के व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के इनकी आउटकम्स, यानी दोनों पे जो भी चीज़ आएगी वो सम होके 3 बनेगी. सो ये कब कब मुमकिन है? इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन एक पे 1 आए और दूसरे पे 2 आए, या जब एक पे 2 आए और दूसरे पे 1 आए. सो दीज आर आउट ऑफ ऑल द 36 पॉसिबल आउटकम्स व्हिच इज लाइक 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू लाइक 6 6. सिर्फ दो ऐसी हैं जिसमें सम टू 3 हो रहा है, व्हिच इज नाउ एसेंशियली आपका यूनिवर्स चेंज हो गया है 36 में, and then there are just two favorable outcomes. So 2/36 या 1/18 is the joint probability of these two events happening simultaneously, यानी the joint probability कि ये इस तरह से इनके results आएंगे कि ये sum होकर 3 बन रहे होंगे. All right, now let me ask a slightly different question. Let's suppose we have already thrown the black dice and we have already known the answer. So the answer is 2. So now what's the probability of the same question sums to 3 given this event? Pause करें और इसका आंसर निकालें. Alright, so black dice के ऊपर already 2 आ चुका है. So that means कि अब दो चीजें तब्दील हुई हैं. एक, favorable outcomes बदल गई हैं. अब white dice के ऊपर सिर्फ एक ऐसी चीज आ सकती है जिसमें sum to 3 fulfill होगा, यानी उसके ऊपर 1 आए, right? और दूसरी चीज कि अब कितनी अनसर्टिनिटी रह गई है हमें इस वर्ल्ड के बारे में, कि अभी भी 36 की अनसर्टिनिटी है? नहीं, अब सिर्फ 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो रह गई, क्योंकि एक डाइस रोल होनी है. तो अब दोनों चीजें अपडेट हुई हैं इस केस में, नॉट जस्ट द न्यूमरेटर बट आल्सो द डिनोमिनेटर. सो देयर आर ओनली 6 पॉसिबल आउटकम्स नाउ, एंड सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम्स टू 3 गिवन दैट ऑलरेडी a 2 ऑन द ब्लैक डाइस इज 1/6. अब यहाँ पर वो यूनिवर्स की जो मैंने बात की थी दोबारा नोट करें कि आपका यूनिवर्स चेंज हो गया है बिकॉज आपकी अनसर्टिनिटी रिड्यूस हो गई है, आपका नॉलेज बढ़ गया है क्योंकि एक आउटकम पहले आ चुकी है. ठीक है, सब कुछ होपफुली आपको सिंपल लग रहा होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें. ऑल राइट, सो नाउ अपना थोड़ा सा सफर शुरू करते हैं और इस सब कुछ को एक ही लेट्स से सीक्वेंस के अंदर पिरोने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स एंड लेट्स बिल्ड अप टू द बेस थ्योरम. सो we have a universe with all possible outcomes, and we are interested in some subset of those outcomes. So we are interested in a certain event, जैसे कि अभी हमने कहा था कि जी 1 आने की क्या probability है, ये लेट्स से जो है मिसाल के तौर पर जो है वो head आने की क्या probability है. So that's an event जिसमें हम interested होते हैं out of all the possible events जो हो सकते हैं with their own associated probabilities. All right, so assume that we are studying cancer. ये एक हम example build करते हैं. So we observe people and see whether they have cancer or not. अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ जहन में रहे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि वी ऑब्जर्व पीपल एंड सी वेदर दे हैव कैंसर और नॉट,
this is close to a divine level of knowledge that we're talking about. Why? ये रिजल्ट्स किसी टेस्ट से नहीं आने चाहिए. सो यानी अब रियल वर्ल्ड में तो नहीं हो सकता. रियल वर्ल्ड में तो कैंसर ऐसे ही पता लगेगा ना अगर कोई टेस्ट होगा. लेकिन टेस्ट खुद, अभी हम थोड़ी देर में जब बिल्ड करेंगे सब कुछ को तो देखेंगे कि टेस्ट खुद भी कंप्लीट नहीं होते इस सेंस में कि वो 100% आपको इस एक्यूरेसी के साथ बता रहे हो कि जो उनका रिजल्ट है वो वही सही रिजल्ट है. सो देयरफॉर जब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वी ऑब्जर्व पीपल एंड सी वेदर दे हैव कैंसर और नॉट, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसे कैंसर है उसे वाकई है, और जिसके बारे में कह रहे हैं नहीं है उसे वाकई नहीं है. सो दिस इज लाइक एन एक्सेस टू अ नॉलेज दैट एज ह्यूमंस वी डोंट हैव. ठीक है, एज डॉक्टर्स एज ह्यूमंस विद ऑल ऑफ आवर नॉलेज वी डोंट हैव दिस नॉलेज, बट हाइपोथेटिकली हम बात उसी की कर रहे हैं. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको चंद मिनट में क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ. So if we take as our universe all the people participating in our study, there are just two possible outcomes for any particular individual. Either they have cancer or they do not have cancer. Okay? So we can split our universe into two events. The people with cancer designated as A and the people with no cancer designated as not A. ठीक है. सो पूरे का पूरा हमारा जो है वो यूनिवर्स वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया. सारी पॉपुलेशन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, वो जिन्हें कैंसर है और वो जिन्हें कैंसर नहीं है. ऑलराइट. सो ये आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा है ये आपका यूनिवर्स है, ये जो आउटर सर्कल है, और जो अंदर इसके नजर आ रहा है जो इनर सर्कल है, दीज आर द वो इवेंट, द इवेंट ए ऑफ द पीपल विद कैंसर. ठीक है, और यहाँ पे उन पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं. सो अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की तरफ आए, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पर्सन from this universe has cancer? So the number of elements in A divided by the number of elements in U would give you that probability. So हम इसमें यहाँ पे कार्डिनलिटी का ये सिंबल यूज करेंगे और हम ये कहेंगे कि the probability of an event A, यानी the probability of a randomly selected individual having cancer is just the relative frequency, the number of elements in A divided by the number of elements in the universe. ठीक है, आसान है. So since A can have at most the same number of elements as U, so therefore the probability of A can be at most 1. इससे ऊपर नहीं जा सकती और at least 0 हो सकती है अगर ये सेट खाली हो, यानी सेट A खाली हो. ठीक हो गया जी, क्लियर है. अच्छा, आगे बढ़ते. Now let's assume that there is a screening test that is supposed to measure something. अभी हमने ये डिफाइन नहीं किया कि वो टेस्ट कैंसर का टेस्ट है या नहीं. It's a test for something. And the test will be positive for some individuals, for some people, and it will be negative for others. So if we take the event B to mean the people for whom the test is positive, then we have a situation like this. So the probability that the test will be positive for a randomly selected individual, it would simply be the relative frequency of the number of people in B, in set B, and the universe. क्लियर हो गया. अब दो इवेंट्स हमारे पास आ चुके हैं. इवेंट ए विच मीन्स अ पर्सन हैज कैंसर, इवेंट बी विच मीन्स अ पर्सन हैज अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट दीज इवेंट्स टुगेदर. ठीक है. इन दिस फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड को अभी जरा छोड़ दें, फर्स्ट एग्जांपल जो आपको लेफ्ट पर नजर आ रही है उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ये टेस्ट था ये कैंसर को मेजर कर सकता था. ठीक है, कितनी अच्छी तरह कर सकता था एक अलग सवाल है, कर सकता था. ठीक है. So if we put these together, these two events together, we get a situation like this. So you have your event A, a person has cancer, event B, a person has a positive test result, and an event AB that a person having cancer has a positive test result. You also have other events here, जिसकी बात अभी आगे होनी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर भी एक दफ़ा देख लें. यहाँ पर हमें और किस्म के लोग भी नज़र आ रहे हैं. ये वो लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, इनका टेस्ट नेगेटिव है लेकिन इनको कैंसर है. ठीक है, ये हमारे फॉल्स नेगेटिव्स हैं. टेस्ट ने इनको पॉजिटिव नहीं कहा लेकिन इनको कैंसर है. इनको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव्स. टेस्ट के नेगेटिव लेकिन फॉल्सली नेगेटिव्स. ठीक है. यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उनको कैंसर नहीं है. इनको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव्स. पॉजिटिव तो आ गया लेकिन इनको कैंसर नहीं है. यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनका टेस्ट भी पॉजिटिव है और उनको कैंसर भी है. इनको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव्स. एंड देन फाइनली यहाँ पर बाकी सारा यूनिवर्स भी है, वाइट वाला एरिया सर्कल के अंदर, आउटर सर्कल के अंदर, जिनका टेस्ट भी नेगेटिव आया है और उनको कैंसर भी नहीं है, जिनको हम कहते हैं ट्रू नेगेटिव्स. क्लियर हो गया जी? सब लोग आप मेरे साथ हैं? सब बातें समझ में आ रही हैं? ओके. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट the overlap of these two events, which is the people
who have cancer and who also test positive, how can I find the probability of that? So we use the overlap. The events are not independent, जो पहली चीज हमें यहाँ नजर आ रही है, and we can compute the probability of both events occurring simultaneously, which is in a shorthand we'll call it either A intersection B, A and B, या AB उसको छोटा करके हम लिख देंगे. So the probability of AB, which is the both events happening simultaneously, is just the number of people in this intersection AB over the number of people in the universe. ठीक है, तो ये probability है एक individual की जिसको कैंसर है और उसका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है. that's the probability of both of these events happening together. The joint probability जो इन events की है वो इस तरह से निकलेगी. क्लियर हो गया जी? ये इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है. अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं. फर्ज कीजिए कि टेस्ट जो था वो लेट से डेंगू का था या वो लेट से कोविड का था, और जो इवेंट ए है वो है, सो द इवेंट ए इज पर्सन दैट इवेंट ए इज दैट अ पर्सन हैज कैंसर, इवेंट बी हैज मींस दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड द टेस्ट इज लेट्स से अ डेंगू टेस्ट. सो अब डेंगू टेस्ट किसी का हुआ है तो इससे हमें उसको कैंसर होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा. ठीक है, सो देयरफॉर दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. दीज इवेंट्स, one happening one of these events happening does not reduce our uncertainty about the second event. ये independent है. अभी हम independence की बात थोड़ी सी और भी आगे जाकर करेंगे, पर खैर इस केस में अगर देखें और मैं आपसे वही सवाल दोबारा करूं, what's the probability of both of these events happening simultaneously? दोनों events के simultaneously होने की क्या probability है? और जो उसकी probability, थोड़ी देर उस पर सोच भी लें आप बेशक, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जिस किस्म का सवाल आपसे इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा किया था. तो ये बेसिकली है कि एक डाइस के ऊपर 6 आ जाए और दूसरी डाइस के ऊपर भी 6 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो एक डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरी डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है. दोनों डाइस पे इकट्ठे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 1/36 है. इज दैट क्लियर? कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है इस बात के अंदर? दोनों के ऊपर इकट्ठे 6 आ जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हम सक्सेसिव कॉइन टॉसेस की बात करते हैं. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? जी 1/2. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इन अ रो? 1/2 into 1/2. What's the probability of 3 heads in a row? 1/2 into 1/2 into 1/2. यहाँ पर इस पूरी चीज के अंदर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट ही हैं. ये इवेंट्स के आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी इसलिए रिड्यूस हो रही है कि द ओवरऑल थिंग कि गेटिंग 6 हेड्स इन अ रो इज हैज अ प्रोबेबिलिटी, एंड दैट प्रोबेबिलिटी वो आपको लग रहा है कि ये कम होती चली जा रही है. तो इसमें आई थिंक इट्स देयर इज अ नेम फॉर इट, द गैम्बलर्स इफेक्ट और समथिंग, जिसमें आपको ये फील होता है कि इवेंचुअली जो है वो मेरा जो है वो कोई दूसरी चीज आ जाएगी, लेट्स से, या इवेंचुअली 6 आ जाएगा या व्हाटएवर. लेकिन ये इवेंट्स एक दूसरे को, यानी पहली दफा 6 आना दूसरी दफा आने के ऊपर असरअंदाज नहीं होता कि उसमें 6 आएगा या नहीं आएगा. ठीक है जी, क्लियर? Independent events. So then what would be the joint probability of both of these events occurring? It would be simply the number of elements in A over the universe multiplied by the number of elements in B over the universe, which is essentially just the product of the two individual probabilities. These two events are independent of each other. एक दूसरे के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इनकी जो probability of simultaneous occurrence है, it's just the product of their individual probabilities. ठीक है जी, ये सब कुछ आपने किया हुआ है, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा हम एक साथ ही इन चीज़ों को देख लें और कुछ रिवाइज होने से बीच में रह ना जाए. Alright, so here अगर हम इसको दोबारा से देखें, we are looking at the entire universe, we are looking at the event A, people with cancer, and we are looking at the event B, people for whom the test is positive. अब हम ज़रा dependent case को देख रहे हैं. ठीक है, so there is also an overlap, the event AB, people with cancer and with a positive test result. There is the event B minus AB, which is people with a positive test result and without cancer. And then, और इसको हमने एक नाम भी दिया था अभी, people with a positive test result, यानी these are positives, and without cancer meaning कि ये falsely positive हो गए, इनको positive नहीं होना चाहिए था, यानी ये वाला group. So this is B minus AB. ठीक है, and similarly you have the event A minus AB, which is people with cancer but having a negative test result. So these are negatives and these are falsely negatives because these have cancer. So these are your false negatives. ये अभी हमने इसकी बात की थी. And then obviously जो पिछले में एक चीज़ और रह गई थी वो हमारे वो वाला इवेंट है जहाँ पर people who have cancer and who have a positive test result or who do not have cancer and have a negative test result, the trues, जिनकी हम इससे पहले बात कर चुके हैं. All right, अब ज़रा इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले आते हैं.
And this is the part which is really important for us. So given that a test is positive for a randomly selected individual, what's the probability that that individual has cancer? अच्छा, अब यहाँ पर अगर तो इंडिपेंडेंट की बात हो रही होगी तो आप खुद अपने जहन में सोच सकते हैं कि डेंगू के टेस्ट आने से उसके कैंसर के होने के बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो बात अभी हम नीचे करेंगे. हाउएवर पहले डिपेंडेंट केस देखते हैं जहाँ पे देयर इज एन ओवरलैप. So in terms of our Venn diagram, given that we are in region B, यानी जब हम कह रहे हैं ना given the test is positive, meaning कि अब आप यहाँ पर हैं, अब आप कहीं और नहीं हैं, अब आप इस जोन में हैं, region B के अंदर हैं. So given that we are in the region B, what's the probability that we are in region AB? So yeah, in other words, given that we are in region B, what's the probability that we are in the region A? ठीक है, essentially that's the question here. So if we make region B our new universe, what's the probability of the event A? So the notation for this is probability of A given B, and it is given as the size of AB, number of elements in AB, divided by the size of B, not the size of the universe, because it's already given कि test positive आ चुका है. तो लिहाजा अब डिनोमिनेटर में यूनिवर्स के अंदर सिर्फ वो आउटकम्स रह गई हैं जिनके बारे में अनसर्टनिटी है. ठीक है, तो लिहाजा यूनिवर्स अब U नहीं है. हाँ, अलबत्ता अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते, इनका आपस में कोई ताल्लुक ना होता, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज स्टिल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज बी के गिवन होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट is essentially again the size of A over U, which is the probability of A. ठीक है, तो ये बात अब जहन में आपने रखनी है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये काइंड ऑफ उसकी डेफिनेशन है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर उसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनड ऑन वन इवेंट कंडीशनड ऑन सेकंड होगी वो उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी. ठीक है, ऑल राइट, सो वी आर मेकिंग सम प्रोग्रेस और हमारे सामने अब कुछ रिजल्ट्स आते जा रहे हैं. All right, let's convert these cardinalities into probabilities. तो अभी तक हमने जो लिखा है ना probability of A given B, उसको हमने लिखा था the size of AB over size of B. इन सबको probability में convert कर लेते हैं by dividing the numerator and the denominator by U. So this is the probability of A given B is essentially now the probability of AB over probability of B. ठीक है जी, क्लियर हो गया. इसी को अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं probability of AB is equal to probability of A given B into probability of B. This is an important result for us. हम वो जो अभी ये गोल लेकर चले थे कि we want to find the probability of a sequence, this is essentially giving us the probability of a sequence. So ये दो चीज़ों का इकट्ठे होना या दो words का इकट्ठे appear होना, what's the probability of seeing the word we are in let's say in English text, would simply be the joint probability of those two words occurring together. और वो इसी तरह से निकलेगी. तो ये अब आप पहली दफ़ा देख चुके हैं कि सीक्वेंसेस की probabilities कैसे निकला करेंगे. अभी आपको दो एलिमेंट्स के सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं, इससे बड़े को भी हम देख लेंगे. So what we have effectively done here is we have changed the universe from U, all people, to B, people for whom the test is positive, but we're still dealing with probabilities defined in U. So ये इस हिस्से को आप डील करते हुए आपने ये चीज़ क्रिएट की है. और ये इक्वेशन 1 है, इसको ज़रा याद रखिएगा. इस चीज़ की अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अगली स्लाइड के ऊपर भी. अच्छा जनाब, now let's ask the converse question. Given that a randomly selected individual has cancer, what's the probability that the test result for that individual would be positive? ठीक है, तो now we are asking the question probability of B given A. given के कैंसर है, what's the probability के result positive आएगा, and this will again be probability of AB over the probability of A, because A में होना तो हमें मालूम है, तो लिहाजा हमारा यूनिवर्स रिड्यूस हुआ और हम यहाँ तक पहुँच गए. अगर मैं इसको भी एक और अंदाज से लिखूँ तो दिस इज essentially probability of AB is equal to probability of B given A into the probability of A. तो अब आपको ये probability of AB दो अंदाज से लिखना आ गया. AB is also the probability of A given B into the probability of B. And we can, और ये वो था जिसे हमने equation 1 कहा था, we can essentially just compare these two, क्योंकि दोनों में ये probability of AB हमारे पास आ रहा है. मैं इसको ज़रा नीट कर दूं कि AB पढ़ा जाए कम से कम ये. So अगर मैं इन दोनों को compare करूं तो we can just get this relation, which is probability of A given B into probability of B is equal to probability of B given A into probability of A, which is to say that the probability of AB is the same whether you're looking at it from the point of view of A or B.
So this can also be written like this. Probability of A given B is equal to probability of B given A into probability of A over probability of B. अच्छा, ये जो सादी सी चीज़, सीमिंगली नाइव सी चीज़ आपको यहाँ पर मिली है, अगर आप हमारे मशीन लर्निंग के कोर्स में आते तो इसके ऊपर हम इसके बाद कई लेक्चर स्पेंड करते खाली इसी बात को अनरोल करने के लिए, अनफोल्ड करने के लिए कि ये इस एक लाइन में लिखा हुआ क्या है. This is a really powerful line that you see in front of you, a very powerful relationship, जिसको हम क्लासिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं, लैंग्वेज मॉडलिंग में भी यूज़ करते हैं. बट बिकॉज यहाँ हमारा मकसद जो है वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द कोर्स ऑफ प्योर मशीन लर्निंग, सो लिहाजा हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ब्रीफली ज़रूर देखेंगे इसको, और लेकिन वो देखकर आगे बढ़ जाएंगे और कुछ और चीज़ों पे चले जाएंगे. फॉर दोज ऑफ यू हु आर मोर इंटरेस्टेड, बाय द वे दिस इज़ रियली पावरफुल, उनके लिए हाजिर हैं हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स भी. अगर वो लेना चाहें तो वो लिंक हमसे ले सकते हैं, या वो अपने तौर पर इसको कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हैं. लेकिन यहाँ मैं इंडिकेट ज़रूर ये करना चाहूँगा कि ये चीज़ इतनी सिंपल और या यूँ कहें कि इस सेंस में सिंपल कि ये यूजलेस हो, नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल रिलेशन विच इज यूज्ड अ लॉट इन मशीन लर्निंग, एंड बेसिकली अ होल ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग विच इज नोन एज द जनरेटिव मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन दिस रियली सिंपल थिंग. ऑलराइट, थोड़ी सी बात इंडिपेंडेंस की कर लेते हैं क्योंकि इसकी बात अभी तक हुई है और ये आगे जाकर इसकी हमें जरूरत पड़नी है. टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ नोइंग अबाउट द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट. एक के बारे में जान लेने से, उसके होने या ना होने के बारे में जान लेने से दूसरे के बारे में हमारी अनसर्टिनिटी कम ना हो रही हो. मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि मैंने एग्जाम दिया है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि मैं पास होऊंगा. मैं कहूँ कि ओके, इट वुड बी सम प्रोबेबिलिटी कि आप पास होंगे, वो किसी तरह निकल रही होगी. अब आप मेरे इल्म में इजाफा करें और मुझे ये कहें कि जी आपने एग्ज़ाम दिया है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि आप पास होंगे गिवन कि आप आज खाना खा चुके हैं. Probably there is no relationship. अगर एग्जाम से पहले खाना खाने की बात हो रही होती तो शायद फिर कोई रिलेशनशिप हम निकाल लेते कि आपके दिमाग में ग्लूकोज है या नहीं है एग्जाम देते वक्त. लेकिन आज के आपके खाना खाने से, लेट से कल के दिए हुए एग्जाम से कोई इतना ताल्लुक समझ नहीं आ रहा. सो देयर इज अपेरेंटली नो रिलेशनशिप, सो देयरफॉर दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, तो जिस तरह से बिल्कुल अभी हमने कहा था कि एक कॉइन टॉस और उसके बाद एक और कॉइन टॉस या टू कॉइन टॉसेस, दे आर इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे को किसी तरह से लिंक नहीं हुए हुए, एक दूसरे को किसी तरह से मॉडिफाई नहीं कर रहे. सो दीज आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इनकी कुछ बड़ी सिंप्लीफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जितना कुछ अभी हम देखते आए हैं ना, इनके लिए वो सब कुछ डिफाइन करना बड़ा सिंपल होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, ए हेड्स है ऑन अ फेयर कॉइन फ्लिप एंड बी है टुडे इज वेडनेसडे. सो द इवेंट्स आर क्लियरली इंडिपेंडेंट. सो टू कंसेक्यूटिव थ्रोज ऑफ अ फेयर डाई आर इंडिपेंडेंट. टू कंसेक्यूटिव फ्लिप्स ऑफ अ कॉइन आर इंडिपेंडेंट. If A and B are independent, then we can show that probability of A, the joint probability of A and B is simply equal to probability of A into probability of B. और स्टेटेड अ बिट डिफरेंटली, आप ज़रा ये समझ लें, जो हमने इससे पहले बात की थी उसे एक और अंदाज से भी समझ लें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि गिवन बी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0. क्योंकि आप ये कह रहे हैं गिवन बी हो चुका है, अब ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अगर बी ही की प्रोबेबिलिटी 0 थी तो उस केस में ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल नहीं होगी. बट फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी दिस प्रोबेबिलिटी विल बी एज इट इज. ठीक है, ये अगर आप उस रिलेशन में भी डाल के देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डिफाइन क्यों नहीं हो पाएगी अगर मैं बी को 0 कर दूं. ठीक है, सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये वो रिलेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही 0 है तो फिर ये डिफाइन ही नहीं हो रहा. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है जी. इसमें होपफुली आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी. और यहाँ से आप इसको बाय द वे ऊपर वाली चीज़ को अपने लिए मैथमेटिकली प्रूव भी करके देख सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इन दिस केस वुड सिंपली बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये दोनों खत्म हो जाएंगे. सो दिस विल टर्न आउट टू बी जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो इफ़ यू हैव अ मोर मैथमेटिकली ओरिएंटेड माइंड, आपको इस तरह ज़्यादा इजीली कन्विंस होते हैं, तो बाय ऑल मीन्स इस तरह से इसको देख लीजिए. ऑल राइट, एक चीज़ की और हम बात कर लें. बाज़ दफ़ा जैसे ही हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की तो फ़ौरन जहन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ जाता है. ऑल्दो कि वेन डायग्राम पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन दिखाना इतना आसान काम नहीं होता. सो ये जो अलग अलग बने हुए सर्कल्स होते हैं ये इंडिपेंडेंस शो कर रहे हैं, ना कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन. और अभी हम बात कर लेते हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स के दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा. लाइक हैविंग अ हेड और अ टेल ऑन अ कॉइन. सो दोनों इवेंट्स इकट्ठे नहीं हो सकते. इनकी दोनों की इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट, कि हेड भी आए और टेल भी आए.
ऑन अ कॉइन टॉस। एक डाइस रोल के ऊपर 1 भी आए और 6 भी आए, ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या 1 आएगा या 6 आएगा, दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये नॉट इंडिपेंडेंट की नजर आ रही है, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। नॉट इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल नहीं होती, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल नहीं होती। probability of A and B, the joint probability equal होती है probability of A into probability of B given A, या the probability of B into probability of A given B, ये अभी हम देख कर आए, ठीक है। and the joint probability is not equal to the probability of A into probability of B। ये dependent events की कुछ properties हैं जो अभी तक हम जिस पे कायल भी हो चुके हैं, जिनको देख कर भी आए हैं। ये दो events जो आपको नजर आ रहे हैं ये independent events हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जी इंडिपेंडेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक हो तो दूसरा हो ही नहीं सकता, एंड इट्स अ बिट हार्ड टू शो ऑन द वेन डायग्राम्स। इस पर जरा सर्च कीजिएगा, आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो in this case where two events are mutually exclusive, the joint probability of them happening is always zero, ठीक है। तो जब भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, ठीक है। For independent events and similarly for mutually exclusive events and for independent events, अगर हमने independent events के लिए ये वाली चीज़ देखनी है तो अभी हम इससे पहले निकाल कर आए हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में उन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि वो प्रोडक्ट होगी उन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का। सो फॉर एग्जांपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब ये दो फर्क आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। ये है जो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, और ये वो दो इवेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। जो कंफ्यूजन आती है ना वो यहाँ से आती है कि समहाउ इन दोनों का ओवरलैप नहीं नजर आ रहा, तो लिहाजा वहां से हम जीरो एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस। So mutually exclusive events A and B are independent if and only if. So mutually exclusive events हो सकते हैं independent if and only if क्या या probability of A zero हो या probability of B zero, then in that case the events are both mutually exclusive and independent, ठीक है। Otherwise A and B are not independent। देखिए ना, mutual exclusion is actually a very strong dependence। मैं अगर आपको ये कहूँ, यूं सोच लें इस चीज को, मैं अगर आपको ये कहूँ कि दो इवेंट्स हैं, the probability of having a head on a coin and the probability of having a tail on a coin, ठीक है, और मैं आपको उसके बाद बता दूं कि हेड आ गया है, तो क्या इससे मेरे टेल वाले इवेंट के बारे में अनसर्टेनिटी में कोई रिडक्शन नहीं हुई? हो गई, पूरी तरह हो गई। आई एम नॉट अनसर्टेन एट ऑल, आई एम नाउ कंप्लीटली सर्टेन कि अगर हेड आ चुका है तो टेल नहीं आ सकती अब। तो लिहाजा mutual exclusion is a strong dependence, it's not independence। independence means कि वो इवेंट दूसरे पे असरअंदाज हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत स्ट्रांगली, एक तो एक के होने ने दूसरे को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया कि वो मुमकिन ही नहीं है। 6 आ गया है, अब 1 आने वाला इवेंट मुमकिन ही नहीं है, 6 आ चुका है, ठीक है। तो ये जरा कंफ्यूजन कभी ना हो आपके जहनों में। ऑल्सो the probability of A given B is equal to 0, ये किस केस के अंदर है? ये है mutual exclusion, so therefore it's not equal to probability of A। so जो mutual exclusive events हैं उसमें ये true होगा, और जो independent events हैं उसमें ये true होगा, and similarly it goes the other way around for probability of B given A as well, ठीक है जी। so I hope it is clear now, कहीं ये confusion नहीं आएगी आपको कि independence और mutual exclusion ये कोई एक चीज होती है। Similarly for mutually exclusive events, for example आपके पास जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ए हेड्स है बी टेल्स है, ये भी हमने एग्जांपल ली थी। या सिमिलरली जो है वो A6 है और B5 है ऑन अ डाई। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली समराइज सम ऑफ दिस। एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम कंडीशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि उसकी फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है। बट कंडीशनल इंडिपेंडेंस है इसके दो इवेंट्स गिवन, so two events A and B conditioned on an event C are independent to each other। तो वो इन दोनों आपस में उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है एक थर्ड इवेंट के ऊपर। एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अराउंड दैट कि क्या वो जनरली इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या कंडीशनली भी होंगे, अगर वो कंडीशनली होंगे तो जनरली भी होंगे। सो वो अभी खैर फिलहाल अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो वी आर जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट।
So let's just quickly summarize. For independent events A and B, the probability of AB, the joint probability of AB is equal to the product of the individual probability of, of A and B. Similarly, the probability of A given B is probability of A, assuming that probability of B is greater than 0, and similarly probability of B given A is probability of B, assuming that the probability of A is greater than 0. For independent events A, B and C, the probability, अब 3 के लिए अगर हम इसको extend करें तो ये बिल्कुल उसी तरह extend हो जाता है. The probability of A, B, C is equal to probability of A into probability of B into probability of C. ये अभी हमने नहीं देखा था, but this is a simple extension of the above rule. Similarly, the probability of AB given C for independent events is equal to probability of AB, which is probability of A into probability of B. Similarly, probability of BC given A, और इसके सारे हम जो जितने भी इसके permutations बनेंगे सबके लिए हम ये काम कर सकते हैं. अच्छा, for dependent events A and B, if the probability, joint probability of AB is equal to probability of A given B into probability of B, या the probability of B given A into probability of A, एक हो जाए और दूसरा given उसके वो वाली चीज़ हो. और इसी को हमने ये देखा था कि हमने Bayes theorem से भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं. So अगर आपके पास इवेंट्स डिपेंडेंट हैं तो A गिवन B का आंसर आपको इतनी मुश्किल से निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो आपका जो है वो कैलकुलेशन इतनी सिंपल है. ठीक है, तो इस वजह से हम आगे जाकर देखेंगे कि कुछ जगहों पर हम ऑल्दो थिंग्स आर डिपेंडेंट, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंडिपेंडेंस की एजम्पशन ले लेते हैं. तो ये इंडिपेंडेंस एजम्पशंस हमारे मैथ्स को बहुत सिंपल कर देती हैं, हमारी कैलकुलेशंस को बाज़ दफ़ा इम्प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल कर देती हैं, बाज़ दफ़ा डिफ़िकल्ट से सिंपल कर देती हैं. ऑलराइट, फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स ए, बी एंड सी, और इसको ज़रा देख लीजिए कि चेन रूल से आ रहा है, तो दो के बजाय 3 इवेंट्स कर दें. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी. ये अब आपने चेन रूल लगाया, और इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते थे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी सी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये और तरह से भी हो सकता था. इसकी एक फॉर्म मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए into the probability of C given A B, ये जो दोनों काम हो चुके हैं. ठीक है, और इसको अगर और एक्सटेंड करना होता है A B C D E F जितना भी होता तो हम इसको करते जाते, और यही वो चीज़ है जिसको हम यूज़ करेंगे in order to define the probability of a sequence. So the probability of, let's say, having word 1, word 2, word 3 up to word n would simply be the probability of word 1 into the probability of word 2 given word 1 into the probability of word 3 given word 1 word 2 into the probability of word 4 given word 1 2 3 up to the end of the sequence, the probability of dot dot dot, the probability of word n given the probability of word 1 to word n minus 1. ये हमारे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी होगी, एक पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी होगी. ये वो चीज़ थी जिसके लिए हमने फ़िलहाल ये सारा कुछ बिल्डअप किया है, और अब इसके ऊपर हम अपनी अगली गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं. Alright, so let's begin with trying to convince ourselves that the concept of the probability of a sentence is a real one. So consider this sentence. All of a sudden, I notice 3 guys standing on the sidewalk. A standard English sentence, and I believe that we are able to understand this, parse this in our heads, and we feel that it's okay. However, if we have a sentence, on guys all I off notice sidewalk, 3 are sudden standing the. So now you can see that in this sentence, obviously the words are jumbled up. But if I ask you to compare these two sentences and tell me which one of them is more probable to find in a real English book, I think we can agree that the first one is more probable, much more probable than the second one. You can even verify it by just like searching for these sentences on Google with quotes, and although these are long sentences, probably in either case you won't find them exactly, but certainly the second one would be rare as compared to the first one. And if these would have been shorter, like all of a sudden versus on guys all I, if you search for these two strings, you'll find more occurrences of the first one compared to the second. So there is a concept of the probability of a sentence. Some sentences are more probable than other sentences, and counts of such sentences in available bodies of English text could be a way of figuring out these probabilities. So that's the basics of it. So the counting comes very like it's a very basic concept in figuring out the probability of sentences. The same concept can be extended to figuring out the probability of certain words in certain positions in a sentence.
So if I'm trying to create a word predictor, just like you have predicted text, predictive text input in your cell phones, आप कुछ लिख रहे हैं और वो predict कर रहा है कि इसके बाद जो है वो क्या word आना है, so word prediction हो रही है उसके अंदर. So that concept is very closely related to the concept of the probability of a sentence. So a sentence is formed out of words. So we can basically stitch together the probabilities of all the words to find out the total probability of the sentence. So in this case, let me give you an example. Please turn your homework dash. So अगर आपको predict करना पड़े, you can probably think of some words जो यहाँ पर ज़्यादा probable हैं versus some other words जो कि कम probable हैं. For example, in might be very probable, over might be very probable. For example, the might not be very probable, and even less probable would be, let's say, a word like refrigerator. So please turn your homework refrigerator. Please turn your homework the. Please turn your homework am. So these are not very probable. Please turn your homework in, over are much more probable, right? So, and when you plug those more probable words in, you get a more probable overall sentence as a result as well, compared to other sentences that will be formed with other words. All right, एक और एग्जाम्पल, वो तो अपनी नौकरी से हाथ धो डैश. So इस मौके पर बैठा might be very probable versus घर और चमचा might be much less probable. मछली, दीवार may not be very probable. I hope you agree. I hope we don't disagree at this very basic point. All right. So how is this useful? Before even trying to calculate this and quantifying this, let's try to think through why is this useful. So we can think of many uses of this. Machine translation, for example. ये एक statement है जिसकी आपके पास नीचे translation लिखी हुई आ रही है, and the translation system itself, the machine translator itself, probably comes up with multiple statements, and now it has to rank those statements and figure out which one of them is a more probable statement that should be sent as an output. So for example, he briefed to reporters on the chief contents of the statement. He briefed reporters on the chief contents of the statement. He briefed to reporters on the main contents of the statement. He briefed reporters on the main contents of the statement. So now of these, the translation system chose the last one just based on the probability, and the probability is essentially counting how many times is like so comparing all of these four statements in terms of their occurrence in existing bodies of English text. पूरा web, for example, पूरा world wide web, या सारे के सारे जितनी भी books आज तक इंग्लिश की लिखी गई हैं, अगर आप उसके अंदर सोचें, so such bodies of text are known as corpora. So corpus is singular and corpora is its plural. Please don't say corpuses in my class. So yeah, उन corpora के अंदर search करके you can basically find these probabilities जैसा कि अभी हम करेंगे. Consider the next two ones. The probability of high winds tonight versus probability of large winds tonight. जबकि ये obviously informal statement है जो यहाँ पर आ रही है. इनमें large winds is not that probable and high winds is much more probable. Similarly, spell correction is another example. So the office is about 15 minutes from my house. और यहाँ पर minutes versus minutes की जो probability है, इसके अंदर minutes की probability ज़्यादा है. So spell correction में भी multiple forms होती हैं. There is a incorrect word spell correction and there is also a correct word spell correction. यानी ऐसा word जो जिसकी spellings ठीक हैं लेकिन वो word वहाँ पर लिखना मकसद नहीं था, तो ये उसके अंदर भी हम इस चीज़ को use कर सकते हैं. Alright, speech recognition. आप देख सकते हैं कि ये जो दो statements लिखी हुई हैं, I saw a van versus eyes of an, these sound similar. एंड वो जो अभी हमने पूरी पाइपलाइन देखी थी ना स्पीच रिकग्निशन की, उस पाइपलाइन के अंदर यू कैन क्लियरली सी हाउ अ स्पीच रिकग्नाइजर कुड just do it wrong and output eyes of an instead of I saw a van. तो अब इन दोनों के बीच में लैंग्वेज लेवल के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स जो है वो एक फ़र्क कर सकती हैं कि कौन सी वाली आउटपुट होनी चाहिए और कौन सा कैंडिडेट जो है वो इतना प्रोबेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इट्स वर्ड्स. Similarly, augmentative communication के अंदर to support people with disability to communicate, word prediction भी, या sentence auto completion भी, even sentence generation भी. Other applications include part of speech tagging, handwriting recognition, OCR. So it's used all over the place. It's like a final layer in most of the text generation and the text recognition pipelines, जहाँ पर आप ये देख रहे होते हैं कि जो statement बनी है वो कितनी probable है, कहीं हमने कोई major गलती तो नहीं कर दी उस statement के अंदर.
So the final words on this idea is that can we predict words in a language? So yeah, can we compare sentences in a language? So in a given context, all words are not equally likely, जैसे कि अभी हमने देखा है. So use this likelihood or probability to guess the next word or to assign probability to a sentence. So yes, we can assign probabilities to sentences. We can also assign probabilities of words in certain contexts. And such models that assign probabilities to words or sentences are known as language models. So language modeling is another way of thinking about classification, where you are classifying a particular, for example, word की जब आप एक prediction कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा word आएगा, तो you have candidates and all of those candidates, let's say the vocabulary of the language, are the different classes जिनके अंदर आपने उस blank को classify करना है और ये कहना है कि ये वाली class जो है ये ज़्यादा probable है और ये कम probable है and so on and so forth. So which one is the most probable class given that blank? That is essentially another way of thinking about language modeling. It is indeed classification, just classifying not in binary yes or no or cat or dog. It's classifying across the whole vocabulary of that language. All right. कुछ इसके ऊपर controversies भी माजी में रही हैं. Even Noam Chomsky has been quoted to say, but it must be recognized that the notion probability of a sentence is an entirely useless one under any known interpretation of the term, which is fine. You will see many controversies between linguists and statistical language processing people and such controversies are from both sides well founded, and they're in good intent. However, to really implement these systems, we have to either follow one interpretation or the other. So to respond to this, here is another quote from Fred Jelinek from IBM Research Group. Anytime a linguist leaves the group, the recognition rate goes up. So yeah, just bringing that up in a light note. Okay. So the next question is that what do you count to calculate these probabilities and where do you count it from? So obviously we have already discussed कि हमारा जो source है इन सब कुछ का counting का वो corpora हैं, collections of text या speech या writing हैं किसी भी language की जिसके अंदर हम ये counting करते हैं. What we count are the actual word forms, जो चीज़ हमें वहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है. For example, cat और cats दो अलग word forms हैं. हम लेमास को काउंट नहीं कर रहे, हम ये नहीं देख रहे कि जी कैट और कैट्स बिकॉज इनका जो है वो डिक्शनरी एंट्री लेमा सेम है, कैट है, तो लिहाजा इसको एक समझे. नहीं, वो एक और तरह की काउंटिंग है जो एनएलपी में और जगहों पर होती है. जिस किस्म की काउंटिंग की हम बात करेंगे, हम यहाँ पर टाइप्स और टोकन्स की बात कर रहे होंगे. और अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि दो चीज़ें क्या होती हैं और आपसे एक एक्सरसाइज भी इस पे करवाते हैं. बट लेमा इज एसेंशली सेट ऑफ वर्ड फॉर्म्स विच हैव द सेम स्टेम एंड पार्ट ऑफ स्पीच एंड द वर्ड सेंस. सो इट्स एसेंशली द डिक्शनरी एंट्री. सो हम डिक्शनरी एंट्रीज काउंट नहीं कर रहे होते, हम अलग अलग वर्ड फॉर्म्स को काउंट कर रहे होते हैं, सरफेस फॉर्म्स को काउंट कर रहे होते हैं. टोकन्स का एक टर्म जो आप देखेंगे, ये नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्पस है, रिगार्डलेस ऑफ उनके यूनिक किए हुए ऑल द वर्ड्स इन अ कॉर्पस जितने भी हैं. सो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द कॉर्पस, दैट्स द नंबर ऑफ टोकन्स. एंड टाइप्स आर द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स इन अ कॉर्पस. तो ये जो ऊपर अभी बात हुई है ना वर्ड फॉर्म और लेमा की, वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि यूनिक वर्ड्स इन अ कॉर्पस का क्या मतलब है कि अगर जो है वो दिस कैट इज बिगर देन ऑल कैट्स, इसके अंदर जब मैं काउंटिंग करूंगा तो मैं कैट और कैट्स को दो वर्ड समझूंगा कि एक ही वर्ड समझूंगा यूनिक जब कर रहा हूँ, तो मैं इनको दो वर्ड समझूंगा. कैट अलग वर्ड है और कैट्स अलग वर्ड है मेरे लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. All right. Let's take an example. Tokens, the number of words in a corpus. Usually हम इसको n capital N से indicate करते हैं. And types are the number of unique words in a corpus. इसको हम V से indicate करते हैं. अब आपसे काम ये है कि आप एक चीज़ करें, ये पढ़ें टोट बटोट के. दो मुर्गे थे दोनों थे होशियार, ये आप पहले भी सुन चुके हैं जो फोनेटिक्स के लेक्चर्स में हमसे. तो अब आप इसको पकड़ें और इसकी मुझे वर्ड फॉर्म, इसकी टोकन्स और टाइप्स दोनों काउंट कर दें. सो यू नीड टू बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ tokens and the number of types in this text. So for example आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं खाली tokens count करूँ, so टोट बटोट के दो मुर्गे थे, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस लाइन में बन रही हैं. सिमिलरली आप इसको आगे चलते चले जाएंगे. और जब आप इसके यूनिक ढूंढ रहे होंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यूनिक के अंदर जो सेम रेपिटेशंस होंगी उनको हम इग्नोर कर देंगे और उनको एक दफ़ा काउंट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये मुर्गे यहाँ भी आ रहा है, मुर्गे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है. तो इन सब को हम खाली एक काउंट करेंगे. दिस इज़ वन यूनिक वर्ड. एंड सिमिलरली और कोई चीज़, एक फॉर एग्जांपल एक
एक एक एक एक और एक, ये सारे के सारे जो हैं ये भी एक सिंगल वर्ड के तौर पे काउंट होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू विल कीप काउंटिंग देम एंड यू विल फाइंड कि जो इसके टोकन्स हैं वो 38 हैं इफ़ आई काउंटेड देम करेक्टली, एंड जो इसकी टाइप्स हैं वो 22 हैं इसके अंदर. तो you can just verify that and you can just do it on your own. In general, the vocabulary size or the number of types, it is greater than, so जिस तरह ये grow करती है, it grows with an order of under root n. So the number of types increase at least as the square root of the number of tokens. So this is usually true for all natural texts. Alright, so let's assume we have a sentence made up of words. So capital W is the sentence and W1 to W2, W3 up to Wn are the words. If I want to find the probability of this sentence, as we have already seen, the probability of W would be the joint probability of W1, W2, W3 up to Wn. Which would be easily converted into using this. If they are independent, obviously we can write them like this, but we are going ahead with the dependence assumption. As we have already seen, words are dependent on their context, so therefore हम इसको use करेंगे इसको probability देने के लिए, and therefore it will become probability of W is probability of W1 into probability of W2 given W1 into probability of W3 given W1, W2, all the way up to the probability of Wn given W1 to Wn minus 1. Now let's look at this in a little bit more detail. ये वही sentence है हमारे पास, ये उसकी probability है जिस तरह से अभी हमने देखी थी. Now we want to figure out how do we actually calculate this. So for example, आपके पास ये sentence है, my dear, here we must run as fast as we can just to stay in place, and if you wish to go anywhere, you must run twice as fast as that. So ये वो Red Queen ने जो Alice को कहा था, Alice in the Wonderland, the story, if you have studied previous courses with me, you already know that I love the story. I hate all movies that have been created on it, almost all movies, but yeah, I love the story. But yeah, so हम वापस आते हैं अपने मौजू के ऊपर. So इस sentence की अगर हम probability निकालना चाहें तो किस तरह निकलेगी? It would be probability of my into probability of dear given my into probability of comma given my dear. अब ये वो decisions हैं जो हमें करनी पड़ती हैं लैंग्वेज में कि क्या पंक्चुएशन को वर्ड समझना है या नहीं समझना है. यहाँ हम समझ रहे हैं, and then it goes on like that until we reach the end of the sentence. So how do we count them? So how do we calculate these? So the probability of my would essentially be calculated just using relative frequency, the number of my you find in your corpus divided by all the words in the corpus. So that's the probability of my. सो जो इसके नीचे ये चीज़ आ रही है ये नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है, ये इस रॉ काउंट को एक प्रोबेबिलिटी, लीगल प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर रहा है, और आइडियली वी वांट कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 से 1 के बीच में सारी पोजीशंस को स्पैन कर सके, यानी ऐसा ना हो कि एक साइड के ऊपर खाली ये कंप्रेस हुई भी हो, बट विल गेट इनटू दैट लेटर. So the probability of dear given my is essentially the count of my dear, कितनी दफ़ा आया है, divided by the count of my followed by anything else. ये इसका एक अच्छा नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है. अगर हम इसको n से नॉर्मलाइज करते तो फिर ये हमेशा बहुत छोटे नंबर्स देता, लेकिन इसके अंदर दिस कैन आइडियली रिटर्न टू रीच 1 एक्चुअली. अगर खाली माय के बाद सिर्फ डियर ही आता है तो दिस वुड बी काउंट ऑफ माई डियर ओवर काउंट ऑफ माई डियर वुड बी 1. लेकिन अगर माय के बाद बहुत ही फर्टाइल है और बहुत से वर्ड्स आ सकते हैं यहाँ पर, तो देन इट वुड बी सम नंबर बिटवीन 0 and 1. Alright, so this essentially means x तो कुछ भी हो सकता है ना, तो this essentially means just the count of my. So the count of my dear divided by count of my. Just count in your whole corpus कितनी दफ़ा my dear आया है और उसको divide कर दें जितनी दफ़ा my आया है आपकी corpus में. It's really very simple. Alright, then here you have the next is probability of here given my dear. Again ये बिल्कुल उस तरह निकलेगा, the count of my dear comma here, ये बीच में हमने सारे नहीं कैलकुलेट किया, I've just taken this example. So my dear comma here, so this whole thing को आप काउंट करेंगे अपनी कॉर्पस में, divided by my dear comma के ऊपर इसको आप डिवाइड कर देंगे, and similarly you will reach the end of it. So आखिर में जो आप चीज़ काउंट करेंगे वो my dear here से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी चीज़ आप काउंट करेंगे कितनी दफ़ा कॉर्पस में आई है, उसको डिवाइड कर देंगे आप जितनी दफ़ा आपको ये ब्लू वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ आपको जितनी दफ़ा कॉर्पस में मिली. नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज आर नाउ एक्सट्रीमली रेयर इवेंट्स.
ये तो हो सकता है एक दफ़ा भी कॉर्पस में ना मिले। ये पूरा सेंटेंस तो हो सकता है कि पूरी की पूरी इंग्लिश के टेक्स्ट में ढूंढे तो आपको हो सकता है 3 4 5 जगहों पर मिल रहा हो, या जहाँ जहाँ एलिस इन द वंडरलैंड पड़ी हुई है ये बस वहीं मिल रहा हो, या जहाँ कहीं किसी ने इसे कोट किया है वहाँ पर मिल रहा हो। सो दीज आर रेयर इवेंट्स, राइट, रेयर इवन ऑन सच अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट लाइक द इंटरनेट इटसेल्फ। ठीक है, सर्च करके देख लें, ये आपको खाली एलिस इन द वंडरलैंड या उसके कोट्स के अलावा अलग से नहीं मिलेगा। जैसे किसी और राइटर ने खुद से ये जुमला लिखा हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी क्रिएटिव. So that's a big problem कि most of these probabilities would come out to be simply zero because ये counts इसके zero आ जाएंगे, और न्यूमरेटर में वो काउंट्स पहले जीरो होंगे और हो सकता है कि नीचे वाला काउंट भी जीरो आ जाए. So that's then a problem, and we need to deal with it in two different ways. One, we will try to somehow estimate these probabilities so that कि इसमें इतने जीरो आने के चांसेस ना हो, और दूसरा, अगर जीरो आ जाए तो क्या करना है. जो आ जाए तो क्या करना का काम है वो अगले लेक्चर में देखेंगे. आज इसका सिर्फ पहला हिस्सा हम डील करेंगे. All right, so the the problem that we discussed here is that language is creative, so there are just too many possible sentences, and it's hard to estimate long sentences as context may occur very infrequently in text, so we may never see enough data for estimating these. So ये यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ाया था तब आई जस्ट ran this on Google. अब करके देखें तो हो सकता है रिजल्ट्स बदल गए हों, because new body of text continuously they enter on like the on different websites, और different websites भी इनके सर्च के अंदर एंटर होती जाती हैं. बट खैर एनी हाउ, सो ये गूगल पे मैंने सर्च किया है वाटर विद कोट्स, और इसने मुझे इतने इसको हिट्स मिले हैं, 6 बिलियन हिट्स इसको इस चीज़ के मिले हैं. एंड व्हेन आई सर्च फॉर वाटर फ्लोज, ये हिट्स अब कोई 6.3 मिलियन रह गए. एंड व्हेन आई सर्च फॉर वाटर फ्लोज फास्टर, ये हिट्स 19,000 रह गए. अच्छा, अब यहाँ ये याद रहे कि गूगल इसको एज सच सर्च नहीं कर रहा. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल. वो इस क्वेरी को मॉडिफाई भी कर रहा है, उसको एग्जैक्ट सर्च नहीं कर रहा. उसका मकसद आपको बेस्ट सर्च ला कर देना है, बेस्ट हिट्स ढूंढ कर देना नहीं है कि कितनी मिलती हैं. बट एनी हाउ, जस्ट एज अ रफ प्रॉक्सी, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि जब सेंटेंस लंबा होता जा रहा है तो वो कितना रेयर होता जा रहा है. खाली 3 वर्ड्स का सेंटेंस, और 3 बड़े नॉर्मल से वर्ड्स हैं, और वो खाली बिलियन 6 बिलियन से लेकर 19,000 पर आ चुका है, जस्ट बाय फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 word to 3 words. Water flows faster before, and now it's just 5 results because of before. यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा मैंने odd word लगा दिया है. Water flows faster before sinking, ये इतने नहीं हैं. ये कह रहा है कि इसने results water flows faster before sinking without quotes के दिए. With quotes के there are no results found, no results found. So just 4 words का 5 words का सेंटेंस है, और इसको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिली है जो इसका एग्जैक्ट मैच हो. सो दैट्स द प्रॉब्लम कि ये वाली काउंटिंग जब आप पूरा पूरा सेंटेंस काउंट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहा, आपकी किसी बुक के अंदर कैसे मिलेगा. सो सच अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही. ठीक है, ऑल राइट, नाउ दैट वी आर कन्विंस्ड दैट वी हैव अ प्रॉब्लम, let's try to solve it, and we solve it using the finite history assumption. And the finite history is, और यहाँ से आगे अब हम एक लॉसी एस्टिमेशन की तरफ जा रहे हैं. यानी अब चीज़ परफेक्ट नहीं रहेगी, लेकिन परफेक्ट हो ही नहीं सक रही ना, मिल ही नहीं रहे वर्ड, पूरे सेंटेंस मिल ही नहीं रहे. तो अब उसको किसी तरह से सर्चेबल बनाने के लिए हम एक एस्टिमेशन यहाँ करने लगे हैं. और वो एस्टिमेशन ये है कि द वर्ड कैन बी रीजनेबली प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन ओनली रीसेंट हिस्ट्री. व्हाट डज दैट मीन? दैट we just look n minus words into the past, and this is known as an n-gram. So an n-gram looks at n minus words in the past. So पिछले n minus 1 words को देख लें, पूरे के पूरे वहाँ जुमले के शुरू से वहाँ तक के सारे words देखने की जरूरत नहीं है probability find करने के लिए. So when n is equal to 1, we call this a unigram model. So this means कि आपने पिछले 0 words को देखना है, n minus 1 को देखना है ना, तो पिछले 0 words को देखना है, तो ये यूनिग्राम. इसको हम बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल भी कहते हैं, इसको हम बैग ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं. आप में से जो लोग मुझसे मशीन लर्निंग पढ़ के आए हैं वो इस टर्म को ज़्यादा जानते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल. दूसरा मॉडल जो है, इसमें हम पिछले एक वर्ड को देखते हैं, एंड दिस इज नोन एज अ बायग्राम मॉडल. यानी आप दो वर्ड्स की कम्बिनेशंस को देख रहे हैं. इफ यू लुक एट पास्ट 2 वर्ड्स, मीनिंग कि टोटल 3 वर्ड्स को अगर आप देखें प्रोबेबिलिटीज के लिए, तो दिस इज नोन एज अ ट्राइग्राम मॉडल. n इज इक्वल टू 3, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं इस वर्ड द की, in the sentence the its water is so transparent that the, ये आप निकालना चाह रहे हैं, तो in a unigram assumption this probability would be approximated by just finding the probability of the. पिछला कोई word देखने की जरूरत ही नहीं है. So there is no condition here. So that means it's just the count of the word the divided by the size of the corpus. As simple. But obviously you can see कि अब हमने पूरा context ही गायब कर दिया बीच में से. तो this is not such a great assumption, and obviously we know, but can we make it a little bit better? Okay, so let's look at one word in the history.
So the probability of the it's water, so the given it's water is so transparent that, so that is कि हमें वैसे तो क्या ढूंढना चाहिए था, it's water is so transparent the का count divided by it's water is so transparent that का count, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं probability of the given that. So the count आप खाली ढूंढ रहे हैं that the divided by count of that का, जो अभी हम देख कर आए थे, and this is the bigram assumption. And then finally अगर आप पिछले दो words देखना चाहते हैं तो similarly you have the trigram assumption. We can even extend it to like 4 grams, 5 grams, 6 grams, 7 grams, like heptagrams. We can do it like that, and Google has data that for some of its applications, it in some of its models, it does use up to 7 grams. We don't usually have such big data, and even trigrams often are problematic for our usual size corpora कि उसी के अंदर इतने zeros आना शुरू हो जाते हैं कि वो manage नहीं होता. We'll be dealing with the zeros separately, लेकिन just to understand कि even with these n-grams, data sparsity remains a problem. All right. So here you see all the three assumptions again. एक दफ़ा यहाँ पर आपके सामने तीनों इकट्ठी आ जाएंगी. So the probability of word wn given the string of words w1 to wn minus 1, इसको approximate अगर आप खाली probability of wn से करें, so this is the unigram assumption or the bag of words assumption. Probability of wn given w1 to n minus 1 को approximate करें wn given wn minus 1 से, तो ये bigram assumption है, और अगर पिछले दो word से करें तो ये trigram assumption है. All right, here you see the calculation of the whole sentence. So ये आपका पूरा sentence है, इसको आपने ये complete probability निकाली हुई और ये उसको estimate किया हुआ है इस product से overall k is equal to 1 to n. ये unigram probability से किया हुआ है, यानी खाली individual probability निकालने, word 1, word 2, word 3 up to word n की उन्होंने आपस में multiply कर लें. This will give you the probability of the sentence, and that's the bag of words assumption or the unigram assumption. अगर आप हर दो के set की probability निकाल लें, यानी पहला वर्ड गिवन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, यूजुअली बायोग्राम मॉडल में हम अपने पूरे जुमले के शुरू में ना एक स्टार्ट ऑफ सेंटेंस मार्कर लगा देते हैं और आखिर में एक एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर लगा देते हैं. इससे ये हमें फ़ायदा होता है इन दो मार्कर्स लगाने से कि हमें ये भी प्रोबेबिलिटी मिलने लगती है कि कौन से वर्ड्स सेंटेंस के शुरू में ज़्यादा प्रोबेबल हैं और कौन से सेंटेंस के एंड में ज़्यादा प्रोबेबल हैं, चाहे पंक्चुएशन लगी हुई है या नहीं लगी हुई, फुल स्टॉप्स वगैरह लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, राइट. तो हम इसमें ये लगा लेते हैं this. All right, so इसकी probability किस तरह निकलेगी, सबसे पहले निकलेगा जी word 1, so probability of the start of sentence into the probability of word 1 given the start of sentence into the probability of word 2 given word 1 into the probability of word 3 given word 2 and so on and so forth. So अगर मैं इसको लिख ही दूँ, probability of the start of sentence जो कि यूजुअली हम बहुत हाई लेते हैं, या फिर इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस कितनी दफ़ा आ रहे हैं आपकी पूरी कॉर्पस के अंदर, वहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ word 1 given the start of sentence into the probability of word 2 given word 1 into the probability and so on and so forth, into probability of word n given word n minus 1 into the probability of end of sentence marker given word n, and so on. So you're done with this. So this is your, I apologize, this is your bigram probability, and this last one is the trigram probability, जिसमें हम पिछले दो words के साथ जो है वो इन counts को कर रहे होंगे और इन probabilities को find कर रहे होंगे. यहाँ मैं बस इतना मेंशन करता चलूँ कि जिस तरह से हमने ये बायोग्राम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की हैं, दिस मेथड इज़ नोन एज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. इसकी भी बहुत ज़्यादा तफसील में हमने बात की थी मशीन लर्निंग में, यहाँ हम इतनी तफसील से नहीं करेंगे. इसेंशली व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि वी आर कैलकुलेटिंग दीज प्रोबेबिलिटीज़ टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि देखें आप जो ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे हैं ये ट्रेनिंग डेटा से निकाल रहे हैं. हमें नहीं मालूम कि जो अब हमारे पास डेटा आ रहा है क्या उसमें भी वही प्रॉबिलिटीज़ हैं या नहीं, एंड दैट्स अ होल डिस्कशन जो हम अगले लेक्चर्स के अंदर जाकर करेंगे. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड हियर कि आपने काउंट्स जब निकाले हैं बायोग्राम प्रॉबिलिटीज़ के लिए तो ये आपने किसी कॉर्पस से निकाले हैं, उस कॉर्पस में ये चीज़, ये वाला कम्बिनेशन जो है वो इतनी दफ़ा आया था जितनी दफ़ा आप लिख रहे हैं, और ये इतनी दफ़ा आया था जितनी दफ़ा उस कॉर्पस में आपको मिला है. तो अगेन यू आर एसेंशली
just replicating the probabilities, the world of probabilities or the distribution of probabilities according to that training data. ठीक है, और ये जो नीचे ये वाला नंबर है, this is known as the normalizing factor, just to make sure कि आपकी probability 0 से 1 के बीच में lie करे. और इसी को हम relative frequency भी कहते हैं, the observed frequency of a particular sequence divided by the observed frequency of the prefix, जो यहाँ पर आप कर. All right, we can extend this same concept to trigrams, to 4 grams, to 5 grams. Obviously, data sparsity उसके लिए problem बनती जाती है, but even this is an insufficient model as language has long distance dependencies. तो उसको deal करने के लिए now we are coming up with more and better models जिससे उसको deal करने की कोशिश करते हैं. But in any case, we are able to deal with finite windows on both sides of the word to find its context. For example, यहाँ पे the computer which I had just put into the machine room on the 5th floor crashed. यहाँ पे crashed computer के साथ link हो रहा है. So there is a long distance dependency, and this can be even longer. The computer which I had just purchased and then just put on into the machine room on the 5th floor right by the kitchenette crashed. तो ये dependency language में इससे भी लंबी हो सकती है. तो languages are creative and not very simple to deal with in most cases. ठीक है जनाब. So yeah, but we can often get away with n-gram models, and that's what we'll be using for the next set of methods which we'll be using for speech recognition. All right, so we'll stop here with this lecture, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे. एक तो जीरोस के मसले को सॉल्व करेंगे कि अगर जीरोस आ जाएं प्रोबेबिलिटीज़ में तो क्या करना है, क्योंकि पूरा सीक्वेंस ही जीरो हो जाएगा उससे. तो कोई एक बायोग्राम की प्रोबेबिलिटी भी अगर जीरो आ गई या एक यूनिग्राम की भी जीरो आ गई तो सब जीरो हो जाएगा. तो उसको क्या करते हैं डील, और फिर उसके बाद यहाँ से बिल्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे कि अभी सीक्वेंस प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं. नाउ हाउ डू वी एक्चुअली कंपेयर टू सीक्वेंसेज एंड फाइंड आउट द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अलाइनमेंट्स. सो इंशाल्लाह लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.